Hey guys, good morning. Welcome to Bullion Bulls trading. Today we're going to be going through, our bias first of all. So our bias is for now we are bearish for the day, especially 30-minute is bearish, your 15-minute is bearish, your 5-minute is bearish, and then your 1-minute is also bearish. Remember, we look for three confluences. We look for our bias, plus we look for our structure, which is bearish, and then we also look for our volume to then be heavy on one side. Once these three things align, we will start looking for our trade setup. So today, based on the 4 time frames, we are actually bearish for the day, and we'll be looking for bearish moves. Volatility is quite high, so we're going to reduce our size to half of the position. So normally, whatever position size you take, just reduces by half, because our ATR is quite high today. So this ensures that you still take your you take your position size, but you don't really risk a lot. You risk the same amount on your trade, even if the volatility has increased. We're just going to wait because this is still an uptrend, right? This is still an uptrend if you look at here. But if we break this level, then we potentially would come to this level right here. But we still need to see if the level is broken. We do see that the volume is quite high on the downside. We are looking clean. However, our score is still 3 out of 6. So we still need to wait for minimum 4 out of 6 for us to take the trade. Like overall, gold is bearish today. We're gonna try to target the bear side, and we'll be looking for sells. Ideally, we want price to come back to the band, and then we can be looking for sells, or because I don't want price to just reverse from this level back. What we would want to do is we want to break of this level, and then potentially we would look for our setup, because everything is aligned right now, but the score is still not aligned, so we're going to wait for that to align. Everything is looking bearish. We need this 4 out of 6. Our volume is looking pretty strong to the sell side. Our buyers, our sellers are significantly stronger than our buyers. But again, this is a very, very key point right now. And price can potentially reverse from here. So we got to wait and just be patient. But based on the analysis that you see on the chart, we are still bearish, and the structure on the different time frames is still pointing towards a bearish price action. But we would want to wait for the break of this trend line, which is mainly, you can see that it's a clear channel, a parallel channel. So if you go here, draw this from here to here, and then take it like that, you'll see that price is kind of respecting this level pretty nicely. You would essentially would see a bounce happening from here. So price can essentially bounce back to the upside, and that's what we are, we need to be careful before we go short at this level. Because last time price came within the channel, price reversed, and potentially means price can again reverse from this level. So we just gotta wait. And this is where, you need to use your structure plus your, everything. You have to use the bias, which is, the initial bias. Then you have to draw your trend line to ensure that, that even like
you need to see if the structure is still intact. Um, and then based on that structure, you will be able to take the trade. So for now, we're just waiting to be bearish in the market because high time frame is bearish on a 30-minute, on a 1 hour. So we're just gonna wait for now. Setup's looking pretty good, but we have this bounce last time. We had this bounce last time. So we just gotta wait and see if price gives us that continuity to the downside. Okay, okay. We will patiently wait for our setup to form and then we will take the trade. And in this case, what happens is like whenever such a thing happens, we can either look for a quick trade or we can wait for an opposite signal and then take the trade in the direction of the trend. So since we have missed our signal initially, we will wait for a trend to establish and we will wait for this trend line to break. Once the trend line breaks, we can potentially be looking to go short. Like right now, we need to see if it respects the trend line or it's going to break the trend line. The volume's pretty strong. We might see buyers coming in or stepping in soon. So we would need to be mindful of that. And that's why we're not shorting at this level. The price has already broken the previous day low. So that is something that we should keep a note of, is that the previous day low has been broken. So normally when the previous day low has been gets broken, we are in a bear territory. For now, we're just gonna wait and see if no buyers step in at this level, then we potentially would see a continuation move to the downside. However, we are still in a channel, and again, we have to be patient. We have to wait for our setup to form. The volatility is quite high right now, so you might even want to reduce your position to 1/3 of your regular position size. Ideally, that's what you want to do, right? So we don't want to risk a lot on this trade. We have to wait for our setup to form, and we have to be very, very mindful when we are taking the trade. So we're at the bottom of the channel that we have drawn. We're gonna wait and see if the channel gets respected or the trend line gets broken. If the trend line gets broken, then we have a trend to the downside. However, it seems like price is kind of respecting the level. So we're just gonna wait for a little bit more. If you look here, it kind of reversed last time from this exact same position. And that's what we're doing here. We're saying, okay, price went from here to here, then came back down, then pushed back up, didn't reach the other end, reached here, and then came back down. So now we should see price going back up here. We can actually buy at this level, but we'll have to see, okay? Let's wait and watch what happens here. Yeah, buyers have stepped in at this level. That's what we expected for buyers to come in, and buyers came in heavy. Now we need to wait and see if the trend continues, or because it's the bottom of the channel, right? It's the bottom of the channel, and potentially price can reverse from this level back to the upside because oil is going up, which tells us that overall the uncertainty is quite high in the market.
Yeah, the volume's picking up as well. We have more buyers stepping in at this level. They can see the channel as well. Potentially price can go down, take the liquidity, and then push back up. That's another uh, thing that can happen. So we just gotta wait. Yeah, buyers didn't step in. You just have to wait. Yeah, patience is the key, guys. You gotta have patience. When taking such setups, like we'll have to have patience. We'll have to wait. Like price has already reversed multiple times from this exact level, and we should see that happening if gold wants to stay in an uptrend. Based on everything, like everything points towards the uptrend. However, volume is saying otherwise. We just gotta wait. Yeah, this could just be them taking out liquidity. We just have to wait and see if break and then a retest and then a push down. And normally what they would do is they will get rid of everyone here and then they would just reverse the price. We'll just have to wait and see. Buyers are stepping in. Yeah, buyer volume is starting to pick up. We see more buyers coming in.
Yeah, it's risky for now to short here. Just have to wait. Because if it goes back in to the channel, then that would be a clear reversal for us. But if it goes back and retests the channel and then reverses, means that would be a trend continuation. For now, what we want to wait for is we want to wait for a pullback to the upside and then a push back down. Yeah, buyers have stepped in. You just have to wait for now, guys. Yeah, this is like a crucial level. We just need to see if it holds, because we are starting to see buyers coming into the market. Now we want to see if it retests and breaks or it pushes back into the channel. If it pushes back into the channel, then we know that price potentially has reached the end of the channel and would reverse going back up. We just gotta wait. Buyers coming in.
Yeah, it's showing continuation, guys. So we just gotta wait and see if we can come back, get an opposite signal, and then show continuation. Yeah, guys, market is a bit off today. Like we just gotta wait for price to come back and retest this level and then reverse. Also, the volatility is quite high too, so be mindful of trading today. Yeah, it's 15. Like the volatility is quite high in the market today, so we just gotta wait for this to come down, and then we would potentially be looking for trades.
Yeah, the market is quite volatile. You can look at the ATR and see like average candle is 130 pips. You can try one entry right here. If this comes down, we can try to see if we break this level and we can take the trade. Otherwise, we might see a reversal going back up. Let's see what happens. This could just be a retest and a push back down, but it could be, a reversal going back up.
Remember guys, we're going to try right here to go to the sell side. If we see a break here, we would try to go down, like we'll try to take the sell side. Stops will go right above here, and we will target an entry minimum 1 to 2 if it goes and breaks the level. Let's wait. Only if we get like a sell from here down. That's only when we enter. Otherwise, we're just gonna wait for a reversal to the upside. Because news is having a huge amount of impact on gold right now. Let's wait. Like if it goes back into the channel, then we can potentially look for going long. And that also is like when all the criteria is met. So we're just waiting for now, guys. Yeah, this is a hard part of trading. You just gotta wait for the setup to form and then take the trade.
Yeah, position sizing matters a lot. Like if you look at it, right, like right now it's 150 pips every lot that you take. Like for one lot, it's going to be pretty risky. So, like you want to go 1/5 of your normal position sizing. Like only target 1/5 of your position sizing. Yeah, we will try to enter short if it breaks this level. There's just been a lot of selling in gold. Like it's just it just didn't make sense. Like why was gold selling? Because normally, like during conflict, people flock to safe havens and gold should be going up. However, gold did completely opposite and it went down. So this is kind of a little weird, uh, and that's why trading price action along with volume is where you see the full picture, and the bias doesn't work. Like especially in our case today, uh, the channel that we drew didn't hold, and price just ran through the channel. So that is also something to keep in mind. Yeah, we want to see this level break. If this level breaks, then we will target a minimum 1 to 2. But gold has already dropped 5% today. That is a significant drop. Almost like 2,780 pips gold has dropped. This is this is I think the second biggest drop after the last 11% drop during one day. So let's see how gold holds or it breaks basically. Uh, yeah, we're gonna just wait for now. Wait for now. Wait for the setup to form, and then we'll take the trade. This? This was a significant drop as well. But the only issue with this drop was that price was dropping out of channel and then could have stagnated anywhere. And for now, we're just gonna be waiting and watching the chart and seeing if we can find an opportunity to take the trade setup. Yeah, discipline is the key, guys. Discipline is key. You don't want to be forcing trades. You just want to be, taking only the best setups, and then trades will come. Trades will come. All you have to do is just wait. And what do we see here? We're seeing, price dropping. However, volume is still intact. We just still need to see sell volume coming in. Just go 1/5 of your normal position size. Yeah, after such a significant drop, the gold might start consolidating here. That could be one of the scenarios that can happen. Or we can see a break through this level and push down.
Well, guys, we're gonna wait for the break and then we're gonna take our trade. Okay, okay. Get ready. Just gotta wait for the trade setup to form and then we'll take the trade. But it seems like price is just consolidating at this level. So far, so far. Anything can happen. We just gotta wait. Yeah, make it a habit of calculating your position size before you take the trade. This actually saves you a lot of headache because if and your position size is adjusted based off the volatility in the market. Just seeing if we can get a position here. Get ready, guys. Almost. Yeah, we'll go here, sell. Yeah, let's sell this level, guys. Stop goes right above the band. Targeting a minimum 1 to 2. Okay. Let's go, guys. Volume is still strong. Sellers are still strong. Still heavy on the sell side everywhere. Let's wait. Yeah, position sizing helps a lot, guys. Position sizing is the key. You got to make sure your position size is calculated appropriately. In this case, just go with 1/5 of your position. Let's wait. Yeah, stop goes right above the band, guys, like right here. Stop goes right here.
Yeah, having a smaller position size during high volatile environment, like you are still, you stay sane and you don't take bad trades. And even if it's a bad trade, you don't lose much. So this is something we need to keep in mind. We're just waiting for now, guys. Yeah, guys, I closed the position because the reversal is quite strong here, but band band like I think we should be closing positions here because the position, like the reversal is pretty strong and it's followed up with volume. So I think we just have to wait for today. Today we didn't get a good entry. We're just gonna wait for today. No more trading today, guys. Like it's just the market's too volatile and it's not directional. So we're just gonna wait for now. Yeah, guys, it's just the volatility is quite high today and it just doesn't make sense to trade anymore. I'm not gonna be trading for today. And plus the market is just too volatile and too aggressive with its movement too. Like it seems like people are trying to go long, and what the players have done, they have manipulated the price to go down in spite of everything that's happening in the world. So this is just classic manipulation happening in gold right now. Like it's all manipulation in terms of the pricing. Since everyone wants to go long, gold is going short, and that's how basically it is, right? Like
whichever the crowd, whichever the direction the crowd takes, institutions will take the opposite end of that trade. So if everyone is going long, institutions are going short. So we just gotta wait for, better price action, especially today. We got to wait for the volatility to come down, and then we should be looking for trades. For now, it's just a waiting game. Yeah, one key learning point for today for you guys is should be that whenever you see ATR at a higher point, so for example, it's more than like 3 or 4, you need to be mindful and ensure that you appropriately position size, because in such a situation you can pretty much lose your account right away if you don't position size appropriately. So it's really, really important that whenever we trade, we first of all, the first thing we need to do is we need to identify the stop loss. And then based on that stop loss, we need to calculate our position size, which should be reflective of the, the current ATR, because those are the things that will help you ensure that you do not incur huge losses, especially days in where the volatility is quite high. We're just going to remove the drawings, guys. So we're just going to wait. Market's been very, very, it's been very, very, it pushes and then pulls back aggressively, pushes and pulls back aggressively. So what we want is we want to see, a clean move. And right now, the market's not giving us that clean move. So we just gotta be mindful. We just gotta be wait. We just gotta wait and wait for setup to form, and then potentially target the direction. One thing that was a giveaway for today was that the daily candle that opened, it opened below the previous day candle, right? So, for example, if you go to the daily candle, you will see that the daily candle that opened, this daily candle opened below the previous day candle, which led to this expansion phase, and it's coming exactly from this level right here where the previous selling happened. So one thing to keep in mind going forward is going to be keeping in mind that you have uh, a sell level which is right here, which is significant, and since price came close to that level, sellers became aggressive to the downside, and we did not see up movements sustaining much because those sellers were still present and they brought the price back down from that exact same level. So this is something to keep a note of going forward, is that daily levels are significant, and when price does come to daily level, you need to be mindful that there are those previous sellers sitting there who would try to bring the price back down. Overall, on a daily, we're still in an uptrend.
but we did see this aggressive selling once more from the exact same level. Now price can either break the trend, since you can see uh, we made a lower high. If this high continues for the day, then this is going to be a lower high created, and then this could potentially break this level, which can then start potentially a downtrend for gold. But we will have to wait and see what happens. But yeah, like this was a significant level, and that's what we need to make sure that we note down going forward. Is we note down significant levels on higher time frames and uh, see how price behaves close to those levels. Yeah, price broke the whole low, previous day low, price came back, retested the low, and then pushed down, right? And then same here, we had price breaking the low. We did get a sell signal, but that was like around time that we don't trade, and then we see that continuation move coming down. During that time, volatility was still quite high, uh, and normally, like, I think the best practice would be, especially when the volatility is quite high, either you stay out of the market on that day, or you just reduce your position size. And both of these factors would help you, survive in such a market. And you can see how buyers are starting to come in. More buyers have started to come in at this level. We just need to see if, the trend continues going down or it's going to reverse. Because volume is still heavy on the seller side, but buyers have started to step in. Like, all time frames are still bearish. Uh, so for now, we're just gonna wait. And this is the power of actually following a system, because half of the job is actually done. Like, majority of the job is actually done when you come to the chart. You know that you're looking for only sell trades, and if you go counter trend, counter trend is the worst mistake one can make, because that's when you will incur huge losses. So in order to avoid losses, you need to do a couple of things. You need to, number one, follow the trend. Number two, number one, you need to have your right position size. You need to follow the trend, and you need to execute flawlessly. If you do those three things, you need to execute flawlessly your system. If you do those three things, you will become a profitable trader. The market is it's a little slow right now, and you can see the volatility is starting to come down as well.
नॉट ओनली प्राइस एक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन प्लस ग्लोबल सेंटिमेंट प्लस जो अपकमिंग न्यूज आ रहा है, लाइक कि अगर मान लो ईरान हमला कर रहा है या ईरान का कोई लीडर मर रहा है, या मान लो कि अमेरिका क्या कर रहा है, सब चीज डिपेंड कर दे रहा है मार्केट पे। अगर मान लो कहीं से ईरान कोई और यूएस क्रूड ऑयल के जगह पे कुछ भी हमला कर रहा है, तो उसका बहुत, इसीलिए क्रूड ऑयल देख रहे होगे आप कि क्रूड ऑयल गजब तरीके से फटा है, ठीक है, क्योंकि ये सारा गेम आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा कि ये क्रूड ऑयल के ऊपर चल रहा है। और क्रूड ऑयल देखिएगा आप यहाँ पे, तो लिक्विडिटी लेके मार्केट निकला था क्रूड ऑयल इस जगह से। अभी का टाइम बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है ट्रेडर्स के लिए। नागरिक के लिए तो नहीं रहता है, बट ट्रेडर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम। इस जगह से जो मार्केट निकला, फाड़ दिया। और मैंने एक चीज नोटिस करा, 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं कि जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल ने किस तरीके से लिक्विडिटी बना के, लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करके मूव दिया। अगर आप देखोगे, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मूव ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि 26 फरवरी का आया था। और उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी बना के जो रिवर्सल्स दिया है, क्या ही रिवर्सल्स दिया है, उसके बाद बैक टू बैक मार्केट जो है उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है। और ये गेम कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का, बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है वहां पे। अब अगर मैं दिखाऊं आपको कि 1 आवर और 4 आवर में गोल्ड का क्या सीन चल रहा है, तो तुमको देख के मजा आ जाएगा। गोल्ड का भी देखना, गोल्ड का सीन समझना कि गोल्ड वन डे के चार्ट पे देखो, ट्रेड हम लोग ऐसे डायरेक्टली ले भी नहीं सकते हैं, इसके कारण हमें थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा मार्केट का। अगर हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो गोल्ड में ट्रेड। सर मेरा 45 के आया है वॉलेट में, तो स्टक हुआ था, थैंक यू सर, लव यू। सर मेरा 45 के आया है वॉलेट में, जो स्टक हुआ था, थैंक यू। अरे चलिए मुकेश, देखिए इनका पैसा कुछ स्टक हुआ था, वो वॉलेट में आ गया। मैं बोला था ना कि कोई भी इश्यूज नहीं होने देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो यहां देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि गोल्ड का सीन देखो, तो गोल्ड ने लगातार 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 यहां से रॉकेट मूव दिया। और इस जगह पे अगर आप देखोगे, तो जो बड़े प्लेयर्स थे ना, इन सबको वेनेजुएला, ईरान वीरान, ये सारी चीजें लगभग लगभग शुरू से ही पता होती है कि ऐसा ऐसा कुछ सेंटिमेंट होने वाला है। दैट्स द रीजन कि गोल्ड ने जो 1 आवर का कैंडल में, कौन सा दिन था वो एग्जैक्टली अगर दिन देखें हम लोग, दिन तिथि सब देखें, तो कौन सा दिन था, फरवरी नहीं, वो इससे पहले का दिन था, यस, ये वाला दिन था, 28 अक्टूबर। अगर हम लोग देखें तो जो गोल्ड ने ये वाला कैंडल बनाया था ना, दिस कैंडल, यार कैंडल ही भूल गया मैं तो, चलो छोड़ो हटाओ, जो भी सबसे बड़ा कैंडल था, हाँ ये वाला कैंडल मिल गया। 31 दिसंबर का जो ये कैंडल बनाया था ना, सबसे बड़ा वाला कैंडल, ये कैंडल, हाँ कमेंट में आ गया। कहीं ना कहीं लोगों को ये सारी चीजों का प्लानिंग ना, पहले से बिग प्लेयर्स को डेटा होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, और यहां से मार्केट चला। अब देखो एक चीज सुनना, मार्केट कितना हरामी है, कितना ब्रूटल है, इस चीज को नोटिस करोगे तो तुम दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। जब मार्केट टॉप पे ऑलरेडी पहुंच रहा था, हम लोग क्या बैठ के सोच रहे थे कि यार पागल हो गया है क्या गोल्ड, क्यों जा रहा है गोल्ड इतना ऊपर, कोई रीजन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, वेनेजुएला पे अटैक है वो, चलो ठीक है, ग्लोबल सेंटिमेंट है खराब, बट इतना वर्स्ट तो नहीं है कि इस लेवल पे चला जाएगा। अब वही चीज का न्यूज आके कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई कर दिया है, कर दिया ना। अभी इथेरियम गिर रहा है ना, बीटीसी गिर रहा है ना, अपकमिंग डेज में आपको देख लेना, इस चीज का भी न्यूज मिल जाएगा, ये चीज जस्टिफाई हो जाएगा कि क्यों बीटीसी और इथेरियम गिर रहा है। गोल्ड पहले चढ़ा, अभी जाके वो चीज जस्टिफाई कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये ईरान का मूव 29 जनवरी वाला, बड़े प्लेयर्स को कहीं ना कहीं से भनक तो इस चीज का था ही ना, वो वाला सीन हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैं अभी इंडिया में हूं, कि यहां से मार्केट निकला बॉटम, हम लोगों ने ट्रेड भी दिया, चला, अभी का सीन क्या चल रहा है, तो आपका जवाब पता नहीं क्या होगा, पर मेरा जवाब देख लेना इसमें क्या है, कि मार्केट ने 2 से 3 बार लिक्विडिटी लिया, मार्केट काफी अच्छा मूव करा। लाइक यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था डे कैंडल्स में, यहाँ पे फटा मार्केट, यहाँ से फिर से अगेन लिक्विडिटी लिया, यहाँ से फटा मार्केट, अगेन एक छोटा लिक्विडिटी का बच्चा बोल सकते हो कि यहाँ से भी आया, यहाँ से भी फटा मार्केट, और टेक्निकली सारे लेवल्स को निकाला मार्केट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ऐसे दिखाऊं आपको कि क्या क्या चीज है, तो दिस इज द बेस्ट लेवल, जो कि टॉप का लेवल है। इसके बाद अगर सेकंड बेस्ट लेवल ढूंढे, तो वो होने वाला ये। अब इस पे हम लोग एक वीकली कैंडल का भी मार्क करेंगे, मे बी वीकली कैंडल थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। तो यहाँ पे वीकली कैंडल में कोई भी डेटा नहीं है, 4 आवर का कैंडल भी देखेंगे कि 4 आवर में कोई और डेटा तो नहीं है, तो 4 आवर में भी डेटा सेम है, यानी कि टेक्निकली दिस 2 लेवल्स आर द बेस्ट लेवल फॉर मार्केट। मार्केट क्या करता है, अपने लेवल्स के करीब पहुंच के, ऑलमोस्ट कितना करीब पहुंच चुका था, मतलब कि 200 पिप्स 300 पिप्स का दूरी से मार्केट
में एक रिजेक्शन कैंडल बनता है यहाँ पे 4 आवर पे, या अगर मैं 1 आवर पे भी देखूं तो 1 आवर पे, और इस लेवल का जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस ब्रेकआउट से मार्केट को इस हाई तक जाना था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात आपको समझ में आएगा कि जब मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिया था, जब मार्केट यहां से यहां तक में ब्रेकआउट दिया था, प्राइस एक्शंस का एकदम डीप कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, इससे पकड़ लोगे तुम कि खतरनाक लेवल पे कब मार्केट रिएक्ट करेगा, सरप्राइज टाइप का। देखना, आप सोच के देखो, ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स नेगेटिव है। दूसरा चीज, मार्केट गर्दा उड़ा के ट्रेंड में है और अपकमिंग मूव जो है वो बाइंग साइड के लिए फुल बाइजनेस में है। मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, ओपनिंग होते ही इतना बड़ा कैंडल बनाता है, मार्केट गिरता भी उसके बावजूद उठ के खड़ा होकर उसके ऊपर जाता है। और सबसे बड़ा डेटा कि लेवल्स जो है 4 आवर का और 1 डे का यहीं पे है। फिर इस रेड कैंडल का क्या सेंस है, आप बताओ, ये क्या सेंस है? इस 1 आवर के एक रेड कैंडल का क्या सेंस है? जब भाई तुम यहां तक आ ही गया तो एक और ग्रीन कैंडल बना के यहां तक पहुंच जाना चाहिए था। इज इट अ क्वेश्चन मार्क? नहीं लग रहा है कि यार इस पे सवाल उठाना चाहिए आपको? इसका कोई सेंस बन रहा है? आप बताओ, आप मुझे बताओ, प्राइस एक्शन एनालिसिस करके आप क्या ये चीज पता कर पाओगे कि ये कैंडल बनना, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है, क्या ये 1 आवर में, 1 मिनट में रिट्रेसमेंट इज ओके, बट 1 आवर में बनना चाहिए? आप बताइए। नहीं ना बनना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है तो दिस इज अनयूजुअल कैंडल। इस चीज को मे बी आप डिनाई कर दो कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मार्केट तो इसके बाद भी जाएगा। वो गिरना चाहता था यहीं से, पर इसने इस जगह पे ले जाके, और ये सच बता रहा हूं, अगर तुम इस चीज को पकड़ लिए ना कि क्या है ये लेबल यहां पे है, थोड़ा सा ऊपर में चले जाता, 1 आवर का कैंडल का कोई सेंस ही नहीं बनता गिरने का। उसके बावजूद मार्केट तुम देखोगे तो 3 कैंडल होल्ड करा, 3 कैंडल, 1 2 3 4 5 कैंडल्स, टेक्निकली 3 से 4 कैंडल का ब्रेकआउट तक आया, एंड इटसेल्फ वो कैंडल फिर से लो में ब्रेक कर दिया। अब जब यहां से इसका लो ब्रेक हो गया तो आप समझिए कि एक तो दम लगा के बायर्स ने इसको उठाया, दूसरा अनयूजुअल कैंडल बन गया, फिर भी बायर्स ने इस चीज को रोकने का पूरा कोशिश किया, रुक के ब्रेकआउट दिया, और फिर जब हारा गेम तो मार्केट नीचे की तरह फट गया। अब आप बोलोगे इतना शार्प फॉल क्यों आया? तो आपको कहीं ना कहीं ये 1200 पिप्स जो झटके में फॉल करा है, मैंने आपको एकदम जस्टिफाई करने वाला आंसर दे दिया कि क्यों ये जस्टिफाई होकर फॉल हुआ है। अब मार्केट यहां से फिर संभला, अपने आप को संभाला, ठीक है, जो भी हुआ, और फॉल करते 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 कितना नीचे आ चुका है। अब मैं अगर 4 आवर का लेवल्स निकालूं, ठीक है, तो 4 आवर के लेवल्स पे आपको क्या दिख रहा है कि 4 आवर के लेवल्स पे मार्केट के पास जो सबसे बेस्ट लेवल है, एक्चुअली में मार्केट उस लेवल के नीचे जाके क्लोज किया, और इसके बाद जो बेस्ट लेवल होगा वो बेस्ट लेवल होगा ये। देयर आर टेक्निकली 2 लेवल्स जहां पे दम है, हालांकि आप इसको भी लेवल्स मान सकते हो, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लेवल एज लाइक दिस टू वन। तो ये लेवल में जितना दम है और ये लेवल में जितना दम है, इस लेवल में उतना दम नहीं है। दैट्स द रीजन कि मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। अब यहां पे 2 पर्सपेक्टिव क्लियर कट सामने आ रहा है। पहला, अगर मार्केट यहां से संभलेगा तो चलिए थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। दूसरा, अगर मार्केट यहां से नहीं संभलेगा तो जो अगला लेवल आपको देखने को मिलेगा वो 4843 से थोड़ा सा पहले, यानी कि लगभग लगभग 48, मतलब 4900 मान लो ना, 4900 का होने वाला है। मे बी रिट्रेसमेंट बहुत सारा आ जाए पर ये चीज हो जाए। तो दैट्स द रीजन कि अभी यहां से अगर मार्केट गिरता है तो 4.5% का फॉल इसको और करना पड़ेगा। तो 4.5% क्या मार्केट एक बार में फॉल करना प्रीफर करेगा? मे बी नॉट, एक दिन में तो शायद ना भी करे। तो ऐसा है कि इस जगह पे थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल होगा। क्या करेगा? बायर्स को भी फंसाएगा, सेलर्स को भी फंसाएगा, लेकिन फंसाएगा नहीं, दोनों को पैसा भी देगा। तो आपको यहां पे क्या सोचना है? आपको यहां पे लेबल्स देख के दोनों साइड का अप्रोच लेके चलना है। यहां पे आपको ना डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा दोस्त। अगर आप सोच रहे हो कि बाइंग एग्रेसिव मिल जाएगा, मे बी नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो, सारे लोग यही बैठे हुए, गोल्ड सस्ता हो गया, वॉर का सिचुएशन है, गोल्ड बाय करेंगे। बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी डंप कर चुके हैं अपना माल ऊपर में, याद रखना इस जगह पे। बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी एग्जिट, वो नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर उनको बैठ के रखना होता ना तो कुछ तो होता और फिर रिवर्स भी कर जाता। पर चूंकि ये यहां तक आ चुका है, दैट मीन्स कि यार दे आर ऑलरेडी एग्जिट। अभी नहीं है वो यहाँ पे, मतलब सब नहीं, बट मोस्ट पीपल्स आर आउट। तो अब यहां पे हम लोग जो भी है, जिस भी साइड का मूव मिलेगा
उस साइड के अपॉर्चुनिटीज को पकड़ेंगे और हमारे लिए मार्केट अब लिक्विडिटी का गेम खेलेगा और ऊपर और नीचे दोनों साइड का ट्रेड मिलेगा। रोज नहीं मिलता है, कभी कभी मैं क्लियर कट देता हूं कि आप अभी बाइंग का देखो, कभी बोलता हूं अभी आप सेलिंग का देखो। आज आप दोनों साइड के ट्रेड्स देखोगे। अब हुआ क्या, मार्केट फॉल किया, वी डोंट नो कि मार्केट कहां से गिरेगा कहां से चढ़ेगा, आई डोंट नो एंड यू ऑल्सो डोंट नो। बट मार्केट गिरते 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 अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वो पहला लेवल था जिस लेवल पे मार्केट स्पीड से रिएक्ट मारा, यानी कि हालांकि मैंने इस पे ट्रेड भी मारा था और क्यों मारा था वो भी बता दूंगा, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ था। तो स्पीड से 550 पॉइंट्स का पिप्स का मूव दिया। क्या करना है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ करना है, जहां से फिर से मौका मिले वापस से बाय। कितना बाइंग आया है, 650 पिप्स। अगला हाई कहां पे है, यहां पे है। इस तरीके से देख देख के अभी दोनों साइड में प्लान करेंगे। याद रखिएगा, बाइंग बहुत इजीली मिलेगा, सेलिंग थोड़ा सा ट्रैप करके मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इथेरियम वॉलेटाइल है, बीटीसी वॉलेटाइल है, दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो वॉलेटाइल है। अगर मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली तुमको दोनों में ट्रेड दूंगा। ठीक है, तुम बस बैठे रहो। अभी गोल्ड बीटीसी, अब क्या बताया बीटीसी का कि बीटीसी इतना हरामी है कि इजीली तुमको मौका देगा नहीं, लपेट के मौका देगा। अभी देखो यहाँ पे भी ना प्योर 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 लिक्विडिटी का गेम चला है। मार्केट फॉल करा, एक लेवल क्रिएट करा, लेवल से पहले रिएक्ट करा, उन लोगों को बाहर करा और बाहर करके मार्केट अभी यहां से कितना मूव दे रहा है, 1500 पॉइंट्स का मूव दे रहा है। क्या गेम खेल रहा है लिक्विडिटी का। अगला लिक्विडिटी कहां पे है, ये क्या हुआ, हाँ अगला लिक्विडिटी कहां पे है, अगला लिक्विडिटी यहां पे है। तो क्या मार्केट इस लिक्विडिटी से ही गिरेगा, आई डोंट थिंक सो। या तो इससे पहले गिरेगा या तो इसके बाद गिरेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। सब चीज के लिए तैयार है तुम्हारा भाई। Yeah, guys. So it seems like market's pretty slow today. Like there is volatility coming down, and potentially market is setting up for a buy because buy volume has started to pick up. We need to wait to see if it reverses, then we can potentially start looking for sells. But for now, it seems like it's a pullback in this move. The price is pulling back up, and we'll have to wait. But yeah, today's live stream was a bit slow, guys. We're gonna come back tomorrow with full energy, full enthusiasm, and entertain you guys starting tomorrow. Yeah, like we'll switch up the live streams a little bit tomorrow, and I'm positive it'll be really good starting tomorrow. Yeah, today the market was a bit off, but we would see good price action and good movement in the market tomorrow. See you guys tomorrow then. Yeah, I'm gonna just keep the chart open for another 10 minutes and then I'll close it towards the end. Okay. See you guys. तो अगर मान लो कि स्लो के ब्रेक पे, तो आई विल सजेस्ट कि एग्जिट मार देना अगर वापस से रिवर्स करता है तो। ठीक है, हाँ देखते हैं बाकी किस तरीके से मौका मिलता है, जरूर प्लान करेंगे यहाँ पे। सर चांस चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिया, अरे देखो ये तो अभी तो ब्लाइंड फॉल कर मतलब ब्लाइंड ट्रेड बना है। अब ब्लाइंड ट्रेड पैसा दे दे तो मजा आ जाए, लेकिन अगर सीओसी के बाद ट्रेड मिलता है तो सीओसी के बाद देखेंगे। फास्ट है मार्केट, बहुत फास्ट है। ठीक है, अभी नहीं चल रहा है, ये ट्राई कर रहा है। आई थिंक चल भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। जगह देखना पड़ेगा थोड़ा इसका, पुश क्यों कर रहा है ये ऊपर। नहीं, अभी चांस है इसका चलने का। ठीक है, क्योंकि बात क्या है ना, प्राइस ऐसा दिख रहा है कि ये ऊपर जाने से थोड़ा सा कतरा रहा है। बाकी ठीक है, सरप्राइज करके चल जाए वो अलग बात है, बट अभी मुझे जहां तक लग रहा है ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है मेरा। ठीक है, रीजन बता दूंगा क्यों, बाद में लॉजिक पूछ लेना। क्योंकि कैंडल्स दिख जाता है ना, कैंडल्स पढ़ा जाता है कि यार जो हैमर है वो नकली हैमर था, तो वो वाली बात है। हेलो सर गोल्ड भाई, तुम्हारा मास्टर क्लास 1.8 देखा तो आंखें खोल दिया यार तुमने तो। यस, 220 पॉइंट का एक फॉल कैंडल इथेरियम में, 0.3% का एक फॉल कैंडल। लेकिन ये साला फाइट कर रहा है और फाइट करेगा भी।
अरे 8 बजे नहीं आया, सॉरी इसके लिए। ठीक है, जा भाई जा। सर वीआईपी में फाइट करने के लिए क्यों ये एग्रेसिव हो रहा है यहाँ पे? टेक्निकली देखो इसका ना, मैं बताता हूँ आपको क्या दिख रहा है मुझे। टेक्निकली जो ये लेवल मैंने मार्क करके रखा है ना, ये और इसके बियॉन्ड का थोड़ा सा लेवल, वो अभी मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, फाइट पता नहीं क्यों करने का कोशिश कर रहा था, हालांकि अब तो नहीं कर रहा है। और अभी अगर फिर भी करता है तो मेरे लिए तो वो जस्टिफाई नहीं होगी। मेरे लिए थोड़ा सा क्या है कि मार्केट ज़्यादा स्ट्रगल ना करे। अगर मार्केट को चढ़ना है तो थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद चढ़े, तो दैट विल बी जस्टिफाई। क्योंकि इससे पहले चढ़ेगा तो फिर फॉल चढ़ने के बाद आ जाएगा, तो वो वाली बात है। गोल्ड, अच्छा गोल्ड आ गया। गोल्ड अभी लेबल्स के आसपास आ चुका है, बट याद रखना सेलिंग का ट्रेड फर्स्ट स्टेप में नहीं मिलेगा। सेलिंग का ट्रेड थोड़ा सा आसान नहीं होने वाला है। बाइंग का ट्रेड आसान होगा, बाइंग लेवल छुएगा और मार्केट उड़ जाएगा। क्या था सर? वीआईपी में आने के लिए एक्टिव एक्सएम है, उसमें 160 नहीं, 250 का मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो वो चीज़ है। देखो स्ट्रगल कर रहा है इस जगह पे। ठीक है, टेक्निकली अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा तब तो दिक्कत है, क्योंकि जिस तरह का प्राइस बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में गिरा है तो यहाँ तक गिरना चाहिए, लेकिन अगर बार बार स्ट्रगल करता है तो आई डोंट थिंक कि फिर दिमाग इसमें लगाना चाहिए। ठीक है, फिर सीओसी मिलेगा, उसके बाद प्लान करेंगे। तो अगर किसी का भी है तो फिर एग्जिट मारना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मार्केट होल्ड कर दिया इस बड़े वाले सेल का कैंडल जो था ना, जो 200 पॉइंट का सेल का एक कैंडल बना था, इस कैंडल के बाद टेक्निकली मार्केट को विक्स नहीं दिखाना था, मतलब रुकना नहीं था। और अगर रुका भी तो उसका अगला कैंडल में इसको लो ब्रेक कर देना था। बट मार्केट ने क्या उल्टा फैसला किया कि मैं इसको होल्ड करूंगा, अभी भी गिर जाए वही बात है। क्योंकि मुझे इस पे विक नहीं चाहिए था, मैं इस लेवल को देख रहा हूं कि भाई इस लेवल तक मार्केट आएगा, फिर बायर्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। तो वो वाली बात थी। सर वीआईपी में एक्सेस इशूज, अरे आप सब टेंशन मत लीजिए, आप लोग अप्लाई करके रखिए, मिल जाएगा। एक्सेस का टेंशन नहीं है। गोल्ड देखो, गोल्ड अभी देखो, मैं एक बात बताऊं, सुन लो। बुरा लग सकता है और आपको लगेगा गौतम भाई ऐसा क्यों है, ऐसा इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हमको तो शायद, बट आई विल नॉट गिव यू दिस ट्रेड। अब ये अगर फॉल कर जाता है दोस्त, तो मैं तुमसे माफी ही मांगूंगा कि दोस्त मैंने तुमको ये ट्रेड नहीं दिया। क्योंकि मैं बाइंग का ट्रेड भले ब्लाइंडली दे दूं कि एक बार में ले लो, सेलिंग का ट्रेड मैं ब्लाइंडली नहीं दे सकता हूं। सेलिंग के ट्रेड्स में मुझे थोड़ा सा प्रो ट्रेड्स चाहिए, मतलब वैसे ट्रेड जो रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे कि बीटीसी फॉल कर रहा है, वो बार बार फेल करने का कोशिश कर रहा था, तो मैं उस चीज के लिए अब क्या बोला, मैं तो बोल ही दिया कि मेरे लिए तो मार्केट नेगेटिव है, पर पता नहीं क्यों वहां पे स्ट्रगल तो नहीं करना चाहिए। विदाउट दिस लेवल आई कांट थिंक कि मार्केट इतना इजीली पहले चढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले चढ़ेगा विदाउट टेकिंग लेवल्स तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा ऊपर के लिए। और वही कर रहा था, फिर से मार्केट कहीं ना कहीं उसी जगह आके वापस से होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। आई डोंट थिंक कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए, मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, थोड़ा और नीचे गिरना चाहिए। इवन मैं ये भी छोड़ दो, ये लेवल तक का भी मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं यहाँ पे इजिली। बट आई विल सजेस्ट एवरीवन कि अगर आप कोई भी ट्रेड लीजिएगा तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करके रखिएगा कि एक बार अगर कोई ट्रेड आपको पैसा दिया है तो उसके बाद वो पैसा आपके हाथ से लॉस में ना जाए। सीटीसी चला जाए दैट इज ओके, बट लॉस में ना जाए। और ठीक ही करा मैंने गोल्ड में, मैं ब्लाइंड ट्रेड्स प्लान नहीं करूंगा गोल्ड्स के, मैं थोड़े से सरप्राइज ट्रेड प्लान करूंगा। लाइक देखो गोल्ड गिरा किस तरीके से, देखना यहाँ पे। ठीक है, दिखाता हूं। गोल्ड जो है लगातार 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 बुलिस, एक रेड कैंडल और वहां से गेम बच गया। उसी टाइप से कुछ यहां पे भी होता है ना कि फटके एक अजीब टाइप का कैंडल्स में अगर नेगेटिविटी दिखता है, वहां पे मैं घुसना ज्यादा प्रीफर करूंगा रेदर देन कि कोई भी लिक्विडिटी पे बाय या शॉर्ट करने का। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप अगर लिक्विडिटी पे शॉर्ट करना चाहते हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपके फेवर में है तो आप कर लो। ठीक है, और देखो अगर मेरे बात पे किसी ने भी बीटीसी को शॉर्ट करा है, आई विल सजेस्ट कि आफ्टर सम मूव क्वांटिटी को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। आई नो कि खतरे के जगह पे है, इस लेवल से या तो ये आपको लपेट देगा, या तो थोड़ा सा भी मूव दिया तो आपका क्वांटिटी जो है वो कुछ निकल जाएगा। ठीक है,
कुछ तो प्रॉफिट में लॉक हो जाएगा। पर अब यहां तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूं ना, क्योंकि इतना मैं अगर मान लो किसी का भी शॉर्ट है कहीं पे भी, तो 200-250 पॉइंट्स में क्या मैं आपको सलाह दूं निकलने के लिए? कम से कम एटलीस्ट 350-300 नहीं दे तो उससे पहले क्या ही सजेशन दे सकते हैं? तो अब वही है, लपेटेगा तो लपेटाना होगा, कोई उपाय नहीं है। और देखो मेरे लिए तो 1:1 का ट्रेड फेलियर होता है। आई विल नॉट टेक इट लाइक अ फंडेड अकाउंट। का क्या हुआ? फंडेड अकाउंट चाहिए आपको? सॉरी सर, आपसे सीख के आपको ही बता रहा हूं, पर उसका एक ट्रेड लाइन है। अच्छा, किसका ट्रेंड लाइन है जी? भाई मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, मैं समझ रहा हूँ दोस्त। आज आज के डेट में ना बहुत सारे लोगों का अकाउंट वाइप आउट हुआ होगा, और होगा ही ब्रो, आप समझो। इतना वॉलेटाइल मार्केट है, इतना वॉलेटाइल मार्केट है कि आज अगर आप सोचोगे, रिस्क मैनेजमेंट अगर हाथ से छूटा जरा सा भी ना, जरा सा भी छूटा, तो वही है, मैं क्या लाडले मैं हूं हो जाएगा आपके साथ मार्केट में। इसीलिए मार्केट आपके साथ ऐसा कर रहा है दोस्त, और कोई बात नहीं है, ठीक है। हाय सर, गुरुजी बाइनरी में $5,000 का लॉस हो गया है। देखो, अगर ये ट्रेड फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ट्रेड फेल होता है, जिसका चांस अब तो फेल होने का भी हो गया है, तो मैं इसमें क्या ही बोलूं, अब वही वाली बात होगी, ठीक है। सीओसी वाला ट्रेड तो नहीं बना, मैं इसको एज अ फेलियर ही मानूंगा। 1:1 इज नॉट अ गुड ट्रेड फॉर मी, क्योंकि मैं तो अगर सोचता हूं कोई भी ट्रेड का, तो एटलीस्ट जब तक यहां तक का मूव नहीं दे, तब तक मेरे लिए वो ट्रेड ट्रेड नहीं कहलाता है। पर फिर भी अगर किसी का होल्ड है, तो आपको अगर पार्शियल एग्जिट भी करना होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। या तो आइदर यू विल हैव टू टेक स्टॉप लॉस, और आइदर यू विल हैव टू कट सीटीसी, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, टुडे मेड $1,700 जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। अब सुनना, अब जगह आ चुका है गोल्ड का, जहां भी आपको कुछ ऐसा कैंडल, कुछ सीओसी सीओसी या फिर नेगेटिविटी दिखे, वहां पे शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जिस जगह पे जा चुका है ना, अगर गिरना होगा, मतलब समझ रहे हो ना, लेवल्स पे पहुंच रहा है, बस तैयार हो जाओ एक रेड कैंडल का लो, और पहला अटेम्प्ट ट्रेड मारने के लिए। आई नो थोड़ा रिस्की होगा, मैं समझ रहा हूं, पर अब क्या करोगे दोस्त, ऐसे ही जगह पे बनेगा। पूरा प्रोसेस फॉलो किया। अच्छा, आज वीआईपी में ट्रेड क्या मिला? देखो वीआईपी का ट्रेड्स आज दिखा देता हूं। आज वीआईपी में जो ट्रेड्स मिला है, वो ट्रेड्स था, टोटल देखा जाए तो पूरा समरी बता ही दिया है। एवरेज डे था, 2 स्टॉप लॉसेस था, गोल्ड का एक ट्रेड 500 पिप्स का था, और एक यूके 100 में 720 पिप्स का था, न्यूजीलैंड यूएसडी में 1:6 का था। यूके 100 का लेबल्स आने से पहले भेज दिया गया था कि पीपी एंट्री फॉर लॉन्ग, ये लेबल्स था, और एग्जैक्टली आप देखिएगा तो 10,446 से ही मार्केट जो है वो एंट्री बना है, तो समय से पहले एंट्री भेज देते हैं, ये चीज आपको बहुत मजा आता होगा। गोल्ड का भी जो है हम लोगों ने लेबल्स ऑलरेडी भेज दिया था कि 5239.81 इज द लेबल, जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है 2:57 में। और अगर आप देखोगे 2:57 का चार्ट गोल्ड में, तो 2:57 कब था, देखिए। अब आप इसके लिए शिकायत कर सकते हो कि गौतम भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फास्ट है, मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं मिला, पर क्या करें यार, आप बताइए, जैसा मार्केट वैसा ट्रेड। अब 2:47 का जो ट्रेड था 2:57 का, ठीक है, आज का गोल्ड का, और रेट क्या था, रेट ऑलमोस्ट था 5239 के नीचे से आसपास, यानी कि दिस इज द एंट्री लेवल, ठीक है। अब यहां से मार्केट जो है 57 में मैसेज भेजा, 58 में प्रॉपर एंट्री बना दिया, 58 में एंट्री बना दिया, लगभग लगभग यहाँ पे 35-36 के आसपास ही एंट्री मान के चलिए बन सकता है, अगर आप ये लिए, और थोड़ा सा ऊपर मान के चलो अगर आपने ये देखा, तो मार्केट ने यहाँ से 500 पिप्स के आसपास का मोमेंटम तुरंत दिया, उसके बाद गिर गया, तो वी कांट डू। अब आप बोलोगे गौतम भाई ये चीज, और यहाँ पे ये खत्म कर दिया दोस्त, आप, मैं इसको एज अ फेलियर मानता हूं, अगर मेरे बोलने पे मार्केट यहाँ पे गिरा है, मैं इतना सा गिरने का तो कुछ मोमेंटम ही नहीं मानता हूं। 300 पॉइंट्स इज फेलियर, 1:1.5 इज अ फेलियर। जब तक मार्केट 1:4 का ट्रेड में ना दे दूं, तब तक मेरे लिए ट्रेड फेलियर ही है। गोल्ड का गिरने का रीजन मैंने आपको एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बताया है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, फिर बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी गोल्ड का वापस से गिरने का टेंशन मत लो, तुमको मिलने वाला है ट्रेड, ठीक है।
रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, एक्सपेक्ट करना मार्केट फिर फॉल करेगा। ट्रेड बहुत बड़ा मत सोचना कि यार आसमान फाड़ देगा, दुनिया चिर देगा, वो नहीं होने वाला है। पर जितना भी मिले समेट के भाग जाना। चलो, थोड़ा मनाओ कि यहां से ना गिरे, जितना ऊपर उतना बेटर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट किया मार्केट ने, पहला रेड कैंडल का। आपको अगर लेना है, टच होते ही गिर गया, वापस रिवर्स कर गया। अगर आपको लेना है, आप वापस से जब नीचे जाए तब प्लान कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि अब सस्ता मिल रहा है, गिरने के बाद ऊपर उठ गया तो दिमाग लगा लेंगे, नहीं। जितना ज्यादा उस पे ये ऐड कर सकते हैं आप, क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, उतना ज्यादा बेटर है। इवन अगर इसके ऊपर चले जाए, दोबारा कोई रेड कैंडल का एंट्री बनाए, वहां भी ले लेंगे। और अगर लिए होंगे, मान लीजिए रनिंग में ही लिए होंगे, तो रनिंग में निकलना भी पड़ा होगा, क्योंकि बहुत ही फास्ट फास्ट माइक्रो सेकेंड्स के आसपास चीजें हुई है, ठीक है। लेबल्स यही है जहां से हम लोग फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। ऊपर जा रहा, जाने दो, कोई उपाय नहीं है। क्यों एक्सपेक्ट करेंगे सेल, ये भी बता दे रहा हूं मैं। क्योंकि मार्केट किसी के बाप का नहीं है अभी, बायर और सेलर दोनों को लपेटेगा। और मैं तो चाहता हूं कि पूरा ही ऊपर लेके चले जाए मार्केट, इसको एकदम हद पार लेवल पे ट्रेड बनाए, अगर बनाना भी है तो, ठीक है। क्योंकि जितना आसान ट्रेड, उतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है हमारे साथ। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सर आई एम कंप्लीटली ऑल स्टेप, बट बॉटम देखो, आज का डेट पे ना आप बोलोगे ना कि यार गौतम भाई एक ही बॉटम बता पाया, और वो बॉटम इस फॉल के बाद बता दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे ट्रेड दे देना, इज इट्स सेल्फ इट्स अ बिग थिंग, कि 257 में इतना नेगेटिविटी के बाद अगर बताना, इट्स सेल्फ इट्स वेरी बिग थिंग। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं और तुमको दिखाऊं कि बताओ क्या बोल पाओगे, कि यहाँ पे बाय का बटन दबाओ 10,000 आदमी के बीच में, सोचो जरा कि क्या बोला जा सकता है। तो द आंसर इज नो, इतना आसान नहीं है दोस्त, ठीक है। अगर 257 में चार्ट तुमको ऐसा दिखे, तो क्या तुम ऐसे में बाइंग बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, नहीं ना बोल पाओगे।